Hello bachcho, let's read the question. So the question says that explain why phosphorus acid is not tribasic acid like phosphoric acid, though both acids contain three hydrogen in their molecules. Okay, so the question says that जो हमारे पास phosphorus acid होता है it is not tribasic like phosphoric acid but दोनों के पास थ्री हाइड्रोजन होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स में. सो ऐसा क्यों होता है? सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन. सो फर्स्टली टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड. ओके, सो जो हमारे पास फॉस्फोरस एसिड होता है, जो इसका हमारे पास केमिकल फॉर्मूला होता है फॉस्फोरस एसिड का, दैट इज H3PO3. एंड जो फॉस्फोरिक एसिड होता है its formula is H3PO4. So we can see that दोनों के पास 3 हाइड्रोजन है. So in this case दोनों को ही ट्राइबेसिक होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है. ओनली जो हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है इट इज ट्राइबेसिक. ओके, सो इफ वी लुक इनटू इट्स फॉर्मूला, सो जो हमारे पास फॉस्फोरस एसिड है, सो इट कैन बी रिटन एज double O double bond with P, and after that we have hydrogen and OH twice. And जब हम phosphoric acid का formula लिखते हैं then it is like O double bond P OH thrice. So अगर हम इनके formulas को clear देखें, so in case of this phosphoric acid जो three hydrogen है that are attached to oxygen. Okay, so that means they are replaceable. So that's why it is tribasic. Okay, but in this case only two hydrogens are replaceable because दो ही hydrogen है that are attached to oxygen, so that's why it is dibasic. Okay, and जो वहां पे one hydrogen है it is directly attached to this phosphorus. Okay, so this is the reason why this phosphorus acid it cannot act as tribasic like this phosphoric acid, because phosphorus acid के पास सिर्फ two hydrogen है that are replaceable, but phosphoric acid के पास three hydrogen है that are replaceable. Okay, so this is the solution to this question, that is about phosphoric acid and phosphorus acid. I hope you understand it well. All the best.